So these changes we observe basically in case of asexual reproduction as well as in case of sexual reproduction. Now we will be discussing about asexual reproduction process as well as sexual reproduction process in detail. But in this part I will explain you asexual reproduction in more detail, and in the next part we will be discussing about the sexual reproduction. तो asexual reproduction के कुछ special features हम समझ लेते हैं. In this method, a single individual, that is parent, is capable of producing offspring. Point number 2, आपको ये पता है point number 1, point number 2, as a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. Exact copies of their parent. And point number 3, you have to use the term clone, okay, to describe morphologically and genetically similar individuals. इसका मतलब ये है कि asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलते हैं हम उनको एक दूसरे के क्लोन कहते हैं. तो क्लोन इज एग्जैक्ट कॉपी, इट इज जस्ट लाइक अ जेरॉक्स कॉपी ऑफ ईच अदर, नो चेंज एट ऑल. Morphologically as well as genetically there is no change in the offsprings as well as with their parents in case of asexual reproduction. Okay, so this is very important. तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के टाइप्स है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. आप लोगों ने ये सारे टाइप्स 9th और 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़े हुए हैं. ओके, हम इसे ये कवर करके और कंफर्म करके चल रहे हैं कि आपको ये सब कुछ पता है. सो आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ ऑल दीज asexual reproductive processes which were used by the lower organisms. Here you will observe the types like fission, budding. Then there are more types you will observe over here: strobilization, fragmentation, gamete formation. Even more if you go further, which includes regeneration, spore formation as well as vegetative reproduction. तो ऐसे अलग अलग प्रकार के टाइप्स जो है वो asexual reproduction के आते हैं. हमें वन बाय वन हर एक टाइप को समझना है. The first type itself indicates the fission. Fission. What do you mean by this fission? Fission, it means separation of a cell. It is a division of a parent body into two or more daughter individuals identical to the parent, and it is of two type. One is considered as the binary fission, another one is the multiple fission. If you observe in case of binary fission, you will see the binary fission process, okay, which is shown over here in the diagram B. ये जो है ये बाइनरी फिशन है, आपको यहाँ दिख रहा है बाइनरी फिशन, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो सेल है, ओके, ये सेल धीरे धीरे करके इलोंगेट होती है. इलोंगेट होने के बाद उनमें फरो फॉर्मेशन होता है एंड लेटर ऑन दे गेट सेपरेटेड लाइक दिस. सो दीज टू विल बी कंसिडर्ड एज द डॉटर सेल. And if you observe the daughter cell and the parent cells, they are all genetically, morphologically identical, and that is asexual reproduction. तो यहाँ पे आपको ये binary fission दिख रहा है. Okay, similar. So similarly there will be a multiple fission which can be easily indicated, जहाँ पे एक सेल के अंदर बहुत सारी डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनती है और वो बर्स्ट होके बाद में बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. सो दैट मेक्स द मल्टीपल फिशन. वेरी सिंपल. तो बाइनरी फिशन आपको किन में दिखेगा? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजून्स एंड प्लैनेरियंस. और मल्टीपल फिशन आपको मिलेगा अमीबा एज वेल एज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम. सो देयर विल बी अ मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ अमीबा एज वेल एज प्लाज्मोडियम. और बडिंग जो है इट इज अगेन द सेम प्रोसेस लाइक फिशन, बट फिशन में जो है इक्वल डॉटर सेल्स मिलती है, which is not there in case of budding. Budding में bud form होता है and the bud later on detaches from the parent body and will develop into a new organism which can be shown over here in the diagram. देखो अभी ये parent cell है, okay, it is in the case of yeast. आपको अभी ये bud दिख रही है
So this bud will later on detaches and develop into a new organism, and that is what called as a budding process. Yeast जो है वो multiple fission भी दिखाता है. So it is not like a single organism will follow only a single process of asexual reproduction. They might show 1, 2 or 3 different kinds of processes of asexual reproduction, and merely you have to come up with all of the examples related to the binary fission, multiple fission, budding, etc. etc. Budding का मतलब होता है, you know, budding, formation of a daughter individual from a small projection. This small projection we called it as bud. Arising on the parent body is called as the budding, and budding occurs in some protozoans as well as certain lower animals such as sponges, which we call Scypha, coelentrates, Hydra, annelids, Psyllis, and yeast and tunicates, that is Salpa. So that is all the budding process occurs in case of the organism. Okay. So you will observe the third process, and that is called as the strobilization. This might be a new word for you, strobilization. Very simple, you will observe a series of ring-like transverse constriction. Ring-like transverse constriction. तो जैसे ये एक रिंग बन गई, उसके बाद ये सेकेंड रिंग, then the third ring, then the fourth ring. Okay, it is like a stack pile, and these transverse constrictions are developed. An organism look like a pile of minute saucers. So this will be the pile, and this pile of minute saucers called as the strobilization or strobila. The segmented body is called as the strobila. Example, Aurelia. You have seen this Aurelia in case of the phylum Cnidaria. Okay. We have also observed their medusa and polyp stages. So these are all these constriction rings which we were talking about. Ring number 1, sorry. Okay, so ring number 1 here, ring number 2, ring number 3, ring number 4, all that can be easily observed here in case of phylum Cnidaria, and this is a strobilization actually. Each one will develop into a new organism, and that's the peculiarity of this. The fourth one is the fragmentation. In case of fragmentation, the parent body, जो है parent की body, that breaks up into 2 or more fragments. So the fragments will develop of the organism, and each fragment develop into an organism. Example is sponges, sea anemone, and echinoderms. Okay, so fragmentation is again an easy process. Okay, then number 4 is the gamete formation, and gamma formation means these are the specialized structures which are green multicellular asexual buds which developed into a small receptacle called as gamma cup located on the thalli. And this formation, gamete formation, is specific to the liverworts, example Marchantia, which we have observed in the bryophytes. Okay, so हमने ये bryophytes में पढ़ा था, that is a gamma cup formation. So you will observe here some of the diagrammatic representation. Diagram A indicates a zoospore in Chlamydomonas. Diagram B is the conidia of Penicillium. Diagram C, that is bud development in the Hydra. And diagram D is the gamule formation in case of the sponges. So all of these are different diagrammatic representation to indicate the asexual reproduction. Why I am showing you these diagrams? क्योंकि ये जो diagrams है ये NCERT से belong करती है. And many times the questions come straight forward through the diagrams. तो आपको ये diagram दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा what kind of diagram is this, and you have to describe it or you have to select the appropriate option from 4. So that's why I'm showing you these diagrams. Now coming to the next point, जहाँ पे आपको दिखेगा the next process number 6 is the regeneration. Regeneration is the formation of whole body of an organism from a small fragment, that is morphallaxis. Morphallaxis. What is this morphallaxis? Means formation of whole body of an organism from small fragment. छोटे से fragment से सारी organism develop हो जाएगा, छोटे से fragment से whole organism develop हो जाएगा, that we called morphallaxis. And
इपीमॉर्फोसिस, यहाँ ये वर्ड आपको दिख रहा है इपीमॉर्फोसिस, इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट। जैसे एक फ्रैगमेंट है, ओके, या फिर एक बॉडी का पार्ट है, वो बॉडी के पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो जाता है तो उसे आप मॉर्फोलैक्सिस कहोगे, ओके। और उसी जगह पे अगर जो पार्ट लॉस हुआ है वो पार्ट फिर से आ जाएगा तो उसे आप इपीमॉर्फोसिस कहोगे, एंड दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, ओके। सो दिस इज द रीजनरेशन पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आपको तो पता ही है, डेवलपमेंट ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स। You have observed these asexual spores in case of algae also. So spores are propagules which germinate to produce the new individual, and these are several kinds of spores, जैसे कि zoospore है, sporangiosspores है, बाद में chlamydiospores है, उडिया है, कोनिडिया है, एंड मेनी मोर। सो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं, एंड दैट डेवलप्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली। Point number 8 is the vegetative reproduction, and you know about this vegetative reproduction very well. Vegetative reproduction में प्लांट के बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो सीधा नया प्लांट डेवलप करेगा सिंपली, एंड दैट मेक्स इट अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड यू नो द vegetative reproduction processes as we have developed underground modification, we have seen underground modification, then aerial modifications, then subaerial modifications, and we have also observed that these vegetative parts develop into a whole organism, okay. So you know this very well. It is the formation of new plants from vegetative units such as bud, tuber or rhizomes, and these vegetative units are called as vegetative propagules, as you will see over here. While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, whereas in plants the term vegetative reproduction is frequently used. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड यूज होता है तो वो ज़्यादा करके प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। एनिमल के लिए हम जो है वो नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड ही यूज करते हैं, ओके। सो द एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी ओवर हियर। डायग्राम ए इज अ पोटैटो, डायग्राम बी आपको मिलेगा राइजोम ऑफ जिंजर, नंबर सी इज द bulbil of agave plant, number D is the leaf of bryophyllum, and number E is the offset of water hyacinth. Water hyacinth is also called as terror of Bengal. Okay, we will discuss this point in environment chapter. So these are all different diagrammatic representation indicating different types. ये डायग्राम्स भी आपके NCERT के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। बढ़ते हैं आगे, द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, ओके। गुड बाय एंड टेक केयर।